uh, now we are going to discuss a very important concept, that is average atomic mass और isotopic abundance. ठीक है, अच्छा अब मैं जैसे बताया कि all isotopes exist in different proportions, right? So if you take a sample, if you have like a box, okay. So if you have, for example, like a box, and this box contains oxygen, right? So this box contains O2. अभी जो O2 है ना, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर, अभी ऑक्सीजन का व्हाट इज एटॉमिक नंबर फॉर ऑक्सीजन? यहाँ से अगर हम देख लें तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 and atomic mass is 16, right? So 16 is atomic mass of oxygen. अच्छा अब क्या होगा कि अब ये जो है ना ऑक्सीजन का आइसोटोप 8 16, ठीक है, दिस इज द मोस्ट abundant isotope, सही, and it exists in the largest proportion, right? But that doesn't mean कि जो O2 सारी भरी हुई है इसके अंदर, it's all O8 and 16, सही है। इसमें इसमें हो सकता है ऑक्सीजन के, इसमें there is a proportion which contains heavier isotopes of oxygen as well, so O8 18 भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, and O8 20 भी हो सकता है, right? So they all exist in different proportions. So for example, मैं तो इसी example दे रहा हूँ, सही है, it's not like a real number, so let's take some arbitrary numbers. For example, O816, since it's the most abundant isotope, so इस mixture के अंदर there will be 70% O816, ठीक है, and there will be like 15%, for example, O818 and 15% O820, ठीक है। So ये सब इसके अंदर भरे होंगे and they will be all in a mixture, right? लेकिन जब भी हम एक सैंपल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, so we should know its atomic mass as well, right? लेकिन हम एटॉमिक मास किस तरह से इसमें कैलकुलेट करें? 16 होगी, कैसे डिसाइड होता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर लिखी हुई है, ये देखो, ये ऊपर पीरियोडिक टेबल में ये मास लिखी हुई है, ये जो क्या लिखी हुई है 15.999, किस तरह डिसाइड होता है? क्योंकि हमेशा जब भी हम ऑक्सीजन का सैंपल लेंगे या किसी भी एलिमेंट का सैंपल लेंगे, चाहे इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, वेदर लिथियम का ले लो या बोरॉन का ले लो, they all contain mixture of isotopes with all different masses. So how do you decide what mass to put up here? सही, so we calculate an average mass, okay, we take an average of the masses of these isotopes, right? And this average is known as the average atomic mass, ठीक है, average atomic mass की definition आती है, this is the definition of atomic mass, इसी तरह से यही exact definition लिखनी होती है। So basically average atomic mass is defined, the average atomic slash the isotopic mass is defined as the weighted average mass of an element's isotopes measured on a scale where the mass of a carbon-12 atom is exactly 12 grams. सही, ये हमने एक रेफरेंस के तौर पे रखा हुआ है कार्बन 12 एटम को, ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 एटम की जो मास है ना, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट की हुई साइंटिस्ट ने, इस वजह से इसको हमने रेफरेंस के तौर पे रखा है। इसका कोई पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं। सो ये डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज एवरेज आइसोटोपिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, या रिलेटिव एटॉमिक मास, दीज आर सेम थिंग्स, ठीक है, ये दोनों जो लिखे हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये सब सेम है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ये फॉर्मूला है। सो एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट वन, यानी कि कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, so atomic mass of first isotope क्या हो जाएगी? atomic mass of this isotope, ये वाला, इसकी atomic mass क्या होगी? 16, 16, ठीक है, 16। अच्छा अब multiply by the percentage abundance, percentage abundance क्या होगी ऑक्सीजन की? 8 16 वाले की 70। 70, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट में वाला, गिवन होगा। यस यस, ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, 70% राइट, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, अजलान बताएगा। अब एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, फॉर एग्जांपल ये वाला हम इग्नोर कर देते हैं, लेट्स इग्नोर दिस वन, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड, 18, ठीक है, 18, एंड परसेंटेज अबंडेंस 18, सही,
ठीक है, 15%, एंड यू डिवाइड दीज नंबर्स बाय 100। ठीक है, अब दिस कैन बी 15 क्योंकि हमने इग्नोर कर दिया, तो अब क्या होगा? You divide all by 100. या डिवाइड ऑल बाय 100, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग इज कि नाउ अब मैं फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट इग्नोर्ड दिस वन आइसोटोप, राइट? फॉर एग्जांपल दिस डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, तो ये अब फॉर एग्जांपल दिस विल बी 30 क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटोपिक abundances should be 100, right? So 70 plus 30, so this will be 30. Okay? So you get the point, right? So ये सब जो डाटा है ना, it will all be given in the question, and when you calculate this, so you'll get an average atomic mass. So basically average atomic mass होती है ना, it is abbreviated as AR, ठीक है, relative atomic mass, average atomic mass, and this is a mass that is written in the periodic table. इस वजह से ये देखो यहाँ पर दी हुई ना, एग्जैक्ट कभी भी नहीं दी होती, ये देखो 12.011, 14.007, why not just write 14? Why not just write 16? 15.999 क्यों लिखना है? 35.45 क्यों लिखना है क्लोरीन का? क्योंकि सही वो है। एवरेज रिलेटिव मास थोड़ा चेंज होता है ना, क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ होता है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन के मास नहीं है, दिस इज नॉट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास जिसके भी मैं बात नहीं कर रहा था, ये ठीक है, ये वाला, ये ओ इन अच्छा, सब के ये आइसोटोप्स का एवरेज है, इन सब के आइसोटोप्स की मास की एवरेज है। अच्छा। यस, सो दिस समझ आ गया अजलान आपको भी? Yes. सही है, परफेक्ट। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कैलकुलेशन लाजमी आती है आपके एग्जाम में, राइट? सो लेट्स गो एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, ये कौन सा एलिमेंट है? Magnesium. यस, एग्जैक्टली, मैग्नीशियम। सो इधर you're shown three isotopes of magnesium, right? So magnesium 24, magnesium 25, and magnesium 26, and इनकी relative abundance भी दी है, सही है? I need to calculate the average isotopic mass. So how will you do that? So 24, that is a mass of the first, uh, and 24, that is the mass of the first isotope, multiplied by 78.99, that is the abundance of the first isotope, plus 25 multiplied by relative abundance of the second one. Okay. Similarly, 26 multiplied by 11.01, that is the abundance of the third one. Okay. And you have to divide this all by 100, and then you get the relative atomic mass, that is 24.32, और usually periodic table में यही लिखी होती है, सही है? So ये तो एक, I think this is just, these are just arbitrary numbers. So we'll just look at the periodic table. Let's see कि उधर क्या है. That is 24.305. सही है? So yeah. So अभी तक समझ आ गया सारा एवरेज एसिटोपिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी समझ आ गई। ठीक है, सो यही Yes. इस तरह से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है आयरन का, ठीक है? इफ यू गाइस हैव अ कैलकुलेटर, जस्ट ट्राई दिस एग्जांपल एंड लेट मी नो द आंसर, अगर पास पड़ा हुआ कैलकुलेटर, वरना यू कैन जस्ट ट्राई इट एट होम। 57 iron, the least यस, radioactive one. yeah, it is the least abundant one. So you have to calculate the average isotopic mass, just like the previous one, just like the formula that was used to calculate for magnesium. Just calculate for iron. Let's see if you get the answer right. Let me know when you guys are done, okay?
Uh, so average isotopic mass was the last concept for the day. And that finishes our lecture. If you have any questions, you may ask. Otherwise, we can end this session. I have no